So here's a quick tutorial on how to cover your dark circles. So basically this eye has not been covered and I've covered one eye. So here's the trick. Let's jump into the video. So basically I have nothing on my skin right now. So it's very important to prep your under eyes. So just take any under eye cream. Basically hydration is very important. And after massaging it for a while in a dabbing motion, just leave it for around 30 seconds to 1 minute. So now depending on your dark circles, अगर dark circles ज़्यादा हैं तो you need an orange corrector. अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो directly you can go with a concealer which is either darker than your dark circle or it's the same shade of your dark circle. So basically I'll show you using an orange corrector. So it's a cream orange corrector. Just dab it. ये बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है. बहुत ज़्यादा अगर हम ब्लेंड करेंगे तो उसकी ऑरेंज का जो बैलेंस करने की प्रॉपर्टी है इट्स गोइंग टू बी लॉस्ट. सो अगर अब मैं सीधा इसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊंगी तो दिस माइट बी विजिबल फ्रॉम माई फाउंडेशन. सो ऑरेंज करेक्टर को पहले मैं कंसीलर से हाइड करूँगी, देन आई यूज़ माई फाउंडेशन. आई एम टेकिंग अ मीडियम शेड ऑफ कंसीलर. इट्स अ फुल कवरेज कंसीलर. एंड थोड़ा डैम्ड ब्यूटी ब्लेंडर लेके आई जस्ट So after blending it properly, it's very important to set it with a loose powder. So I'll take any loose powder. उसको directly नहीं लगा देंगे हम. So I'll tell you a trick for that. So for instance, I've taken this powder. इसको मैं अगर अभी directly लगा दूंगी तो I might get lines here. Just look up, blend your concealer. एंड नीचे नहीं देखना है. डोंट जस्ट ब्लिंक योर आई. जस्ट लुक अप एंड देन सेट इट विद अ पाउडर. एंड यू आर गुड टू गो. सो नाउ इफ यू कैन सी प्रॉपरली देर आर नो लाइन्स. मतलब जो मेनली मेजर लाइन्स हैं वो तो यू कैन नॉट हाइड, बट कंसीलर की वजह से कोई लाइन्स नहीं बनेंगी. इफ यू कैन सी द डिफरेंस, दिस आई हैज नो कंसीलर. Hope it was helpful.